Okay, let me give you a simple question. Limit x tending to 0 sine 5x upon sine 3x. All right. Try to solve it. So, solved it. It's a very simple question. We know the formula. Limit x tend to 0 sine x upon x is 1. Let's try to create this. For sine 5x, we want a 5x here. So multiply and divide by 5x upon sine 3x, 3x here and 3x here. This will be 1, this will be 1, x yeah. So this is 5 by 3. Okay, very good. Alice, like, what is your name? Or you can rename yourself. Aliza, Fadal, clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I told you one thing also. Limit, left hand limit should be equals to right hand limit, so that we can say the value of limit exists, right? So finding the left hand limit is limit x tending to a minus. A minus means a minus h. Just put that value and you will get the answer. And here put a plus h. You can write it down. A minus h and a plus h.
Okay. So write down one question. Check the limit x tending to 1 f of x exists or not. 1 plus x square, f of x is defined as 1 plus x square, 0 less than x less than equals to 1, 2 minus x when x is greater than 1. Just write it down. I'll solve it. Don't worry. So whenever trying to solve limit, just remember, what do we want to find the limit at 1? They are saying x tending to 1, right? And also addition is breaking at 1, right? Less than 1, more than 1. Yes or no? Yes, sir. So let's find LHL first. So LHL will be limit x tending to 1 minus h f of x. Now 1 minus h means x is a little less than 1. So if x is less than 1, which of the function should I use? The first one or second one? First one. First one. So limit x tending to 1 minus h, 1 plus x square. Just put the value of x as 1 minus h. So you'll get limit x tending to 1 minus h as 1 plus 1 minus h square. As soon as you put the value of x, this becomes h tending to 0. All right, remember this. As soon as you put the value of x in it, change the limit as to h tending to 0. All right, so here we can see if h is 0, this is 1 plus 1, which is 2. Direct substitution method. Yes or no, everyone? Yes, sir. Okay. Hi, Sharish. Hello, sir. Can you hear me? Yes. Why are you not coming to the classes? Uh, I had the viral flu here, so the weather is changing here, so everyone's getting a viral flu. So I was very unwell to even attend class. I didn't even go to school for a whole week. Okay, okay. But please get the recorded lectures. Okay, you missed a lot of classes. Okay, sir. We're doing continuity right now, right? Yes. Okay. But we have completed all the methods of differentiation. All the parts of differentiation we have completed. Only continuity and differentiability is remaining in this chapter. Okay, sir. All right. Hmm. So left hand limit is clear to all. Bolo bhai, Aliza, Yes, sir. Badal. Yes, sir. Yes, sir. So in right hand limit, we'll put limit x tending to 1 plus h f of x, and this is equals to limit x tending to 1 plus h f of x will be 2 minus x, क्योंकि x is more than 1. So let's change the limit h tending to 0, 2 minus 1 minus h is 0. We can use direct substitution. So this will be 2 minus 1, which is 1. So is LHL equals to RHL? No, sir. Yes or no? No. So LHL is not equals to RHL. So limit does not exist. Please note it down. देखो आई नो ये थोड़ा सा ना बोरिंग हो जाता है मैथ्स में, ठीक है, लिमिट निकालना, बट प्लीज कैरी ऑन विद Yes, दिस. sir. ठीक है, बहुत जरूरी है. ओके, यू विल गेट एटलीस्ट
4 to 5 मार्क्स क्वेश्चन आउट ऑफ दिस, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, एंड दोनों में लिमिट ही निकालना है, ठीक है। Yes, sir. फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, इंटीग्रेशन एंड लाइक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये बहुत बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे, बट वी हैव टू बियर दिस, ओके। Yes, sir. नोट इट डाउन। डन एवरीवन? Yes, sir. क्वेश्चन करिए फटाफट से। f of x equals to 2x plus 3 and x is less than equals to 0, 3x plus 3 and x is more than 0. Find limit f of x tending to 0. Okay.
Done everyone? Yes, sir. बताओ फिर ये है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, करता है तो कितना होता है? Less than 0 means we'll take h tending to 0, and 2x means 0 minus h plus 3. So 2 into 0, this is 3. Okay. RHL, limit x tending to 0 plus f of x. So this is limit h tending to 0 and 3, 0 plus h plus 3. So we can see both are equal. So the limiting value will be also 3. Okay. Is anyone not understanding this? Understood, sir. भाई बाकी लोगों को क्या हुआ? अलीजा, शहरीश, देबोरा? Understood, sir. कंटिन्यूटी, देखो बहुत सिंपल सी बात है। कंटिन्यूटी मतलब ये देखो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कैसे पता हमें? हाउ डू वी नो? There are no breaks, No sir. breaking देयर आर point. नो ब्रेकिंग पॉइंट्स, राइट? कंटिन्यूटी मींस मतलब सीधे बिना हाथ उठाए आपने अगर ग्राफ ड्रॉ कर दिया, देन दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। Yes, sir. ये कोई नहीं पूछेगा, पूछेंगे क्या? बताओ कंटिन्यूअस है या नहीं। ओके, व्हाट द पॉइंट्स आर इफ दे आर कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस। कैसे निकालें? इफ limit x tending to a f of x is equals to f of a, तो हम बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू a। किसी एक पॉइंट पे निकालेंगे ना कंटिन्यूटी, पूरे ग्राफ में तो थोड़ी निकाल सकते हैं, हर पॉइंट में Yes, इंडिविजुअली sir. निकाल के देखेंगे। ओके, x इक्वल्स टू a1, x इक्वल्स टू a2, a3 एंड सो ऑन। तो अगर a पे चेक कर रहे हैं तो हम पहले लिमिट निकालेंगे एंड उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट a। व्हाट आई मीन बाय दिस, सपोज एक फंक्शन हो 2x plus 3, they are saying find the continuity at x equals to 1। तो आपको क्या करना पड़ेगा? LHL निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा f of 1। ये तीनों इक्वल आने चाहिए। ओके, Yes, sir. ऑल ऑफ यू आर क्लियर? Yes, sir. एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, अगर फंक्शन कभी ऐसा ब्रोकन नहीं है, मतलब यहाँ एक फंक्शन देखो सिंगल था, इन द प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ फंक्शन दो हिस्सों में टूटा हुआ था। जहां भी दो हिस्सों में टूटा हुआ होता है ना, देयर यू हैव टू फाइंड LHN एंड RHL। बट अगर ऐसा नहीं होता, जैसे यहाँ एक ही फंक्शन है, देन यू डू नॉट हैव टू फाइंड LHL RHL, जस्ट फाइंड लिमिट। मतलब कोई भी एक निकाल लो, लिमिट निकालना सीखा हमने पिछली क्लास में, फाइंड लिमिट एंड फाइंड f ऑफ a। ये दोनों इक्वल आ गए तो चलेगा। ठीक है, इज इट क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, sir. ओके, सो ये चीज लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू चेक कंटिन्यूटी यू हैव टू फाइंड दिस लिमिट f of x tending to a equals to f of a। डन?
देखो फेलियर्स या नोट, the function is not continuous with the following reasons. बहुत सिंपल सी बात है, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या वो कंटिन्यूस होगा? देखो कंटिन्यूटी कब होता है, जब लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x शुड बी इक्वल टू f ऑफ a। मैं कह रहा हूं लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट मींस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देन विल दिस बी फंक्शन बी कंटिन्यूस? अरे हाँ या नहीं? Yes, sir. होगा कंटिन्यूस? अरे नहीं होगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? बहुत डिफिकल्ट हो रहा है? अलीजा, शहरीश, देबुरा, बादल जी, समझ में आ रहा है कुछ? इज इट यू आर फाइंडिंग सिंपल और नॉट? Yes, sir. तो बताओ फिर इसका आंसर क्या होगा? इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं? नहीं होगा सर। नहीं होगा। नहीं होगा। देखो ग्राफ से सोचो, एक लाइन ऐसे है, उसके बाद ग्राफ ऐसा है, लेफ्ट में इस पॉइंट पे अगर लेफ्ट आए हम तो ये वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है 4, अगर राइट पे देखें तो ये वैल्यू आ रही है 5, ऑब्वियसली ये टूटा हुआ है ना? Yes, यस sir. और नो? तो लिमिट अगर एग्जिस्ट ना करे then the function is not continuous। ऐसे हम बोल सकते हैं कि f of a अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो भी क्या होगा, ये नॉट कंटिन्यूस। तीसरा रीजन क्या है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू f of x इज नॉट इक्वल टू f of a। ठीक है, इन दोनों का ग्राफ देखो कि लिमिट तो एग्जिस्ट करता है बट इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है, यहाँ पर फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई ग्राफ ही नहीं है उस पॉइंट में, तो फिर हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस नहीं है, टूटा हुआ है। इन द थर्ड केस लिमिट एग्जिस्ट करता है, दोनों सेम लेवल पे हैं, बट x इक्वल टू 5 पे सपोज वैल्यू लाई करती है 8, लिमिट की वैल्यू आ रही है 4 और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है 8, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन टूटा हुआ है। ओके Yes, sir. ओके, कॉपी इट डाउन। आप लोग ना प्लीज कैमरा ऑन करिए सब अपने अपने, ठीक है? फोकस मोड ऑन है, सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ आप लोगों के कैमरास। प्लीज कैमरा स्टार्ट करिए आप सब ना, वरना आपके घर पे कंप्लेन जाएगी अभी। ठीक है 2 minutes, sir. ओके, टेक योर टाइम, 2 minutes 3 minutes, बट प्लीज स्टार्ट योर कैमरा। ओके एवरीवन, प्लीज स्टार्ट योर कैमरास। ओके शहरीश, ठीक है, अब से क्लासेस में यू हैव टू सिट विद कैमरास। काफी टाइम पास कर लिया आप लोगों ने।
Your computer camera does not work. Deborah, for this class, it's okay. But from the next class, you have to start the camera, okay? Fadil, ठीक है? Noted, everyone? और जिसके घर में अगर बैकग्राउंड नॉइज नहीं है ना, आप अनम्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनम्यूट करके रखो, रिप्लाई कर दो। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको बार बार अनम्यूट करने में दिक्कत होती होगी, ठीक है? बट अगर बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, देन यू कैन कीप इट अनम्यूटेड, ताकि इंटरेक्शन सही से हो। लिख लिया सबने? कॉपीड? Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन करते हैं। अब सबको लिमिट निकालना पड़ेगा। अब सबकी शक्लों से देख के ना मैं समझ सकता हूँ कि किसको क्या समझ में आ रहा है, किसको क्या नहीं। Yes, sir. Show that the function f of x given by f of x equals to sin x by x plus cos x when x is not equals to 0 and 2 when x is equals to 0, ठीक है? is continuous at x equals to 0, ठीक है? मैं क्वेश्चन कॉपी कर ली, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे करना है। कर लिया कॉपी? Doing, sir. Yes, sir. See, if function is continuous, then we know limit x tending to 0, f of x should be equals to f of 0. Yes or no? ये बात क्लियर है ना? लिमिट को इक्वल करेंगे f of 0 से, ठीक है? नाउ इफ यू लुक एट हियर, फंक्शन इज नॉट ब्रोकन, ठीक है? यहाँ बोल रहे हैं x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड हियर x इज इक्वल टू 0। कहीं भी आपको लेस देन या ग्रेटर देन वाला साइन दिखे ना, देन ओनली फाइंड LHL RHL. Here you can directly find this limit. Just find limit x tending to 0, because when x is tending to 0, that means x is not equal to 0. Yes or no? Yes, sir. So, आपके अगले एग्जाम में पूरे नंबर आने वाले हैं, that means नहीं आए हैं अब तक. So x tending to 0 means x is not equal to 0, and they are saying जब भी x 0 नहीं है, then this is the value of the function. So you do not have to find LHL or RHL, directly find limit. So put f of x equals to sin x by x plus cos x. We can find this limit. Sir.
Got the answer? Yes, sir. देखो लिमिट जो नहीं थे क्लास में, you will use direct formulas. ठीक है, Aliza, you are not Yes, sir. there, so please get the video. You will get the standard formulas. Okay, and Cherish also. Yeah, Aliza आप थे शायद, right? Okay, Cherish, you are not there, so get the recorded lectures. So यहाँ हम लिख सकते हैं x tending to 0 sin x by x plus limit x tending to 0 cos x. पहले पार्ट का लिमिट कितना होगा? sin x by x, ये स्टैंडर्ड One. फॉर्मूला है ना, 1, बिल्कुल सही, प्लस cos 0 इज Cos 0 is 1. 1, cos 0 is also 1, so this is 2. 2, Now right? f of 0, look at the function. They are saying when x is equal to 0, the value of the function is 2. Okay, अरे ये समझ में आता है ना सबको? जब ये ऐसे तोड़ के लिखते हैं फंक्शन को, क्या लिखा होता है, ये क्लियर है सबको? या यही नहीं Yes, समझ में sir. आता? आता है सर. Okay, so when x is equal to 0, the function is 2. So we can directly write 2. So we can see limit x tending to 0 f of x equals to f of 0. So this function is continuous at x equals to 0. Okay. Yes, sir. Sir, limit x tends to 0 sin x by x, we're using that the differentiability का formula, right? नहीं, this is a standard formula. Limit x tending to 0 sin x by x is 1 always. Okay. Okay, just get the last lecture of this continuity, first lecture, you'll get all the limits formulas. Okay, Okay, sir. लिख लो किसी को अगर लिखना है. डन. Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं. यहाँ आपको करना है खुद से, और सबकी शक्लें दिख रही है, मैं पहले बता रहा हूँ, एकदम देख के समझ जाता हूँ मैं. Yes, sir. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. कोई नहीं अलीजा, आप इधर ध्यान दीजिए, कोई बात. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन at x equals to half, where f of x equals to half minus x when 0 less than x less than half, 1 when x is equals to half, and 3 by 2 minus x when half is less than x less than 1. ठीक है, पहले पढ़ के देखो. Will we use directly limit or we have to find LHL और RHL? कैसे करना होगा? जब भी लिमिट निकालेंगे, So we'll have to use Left LHL and hand, RHL, right? right hand side limits yes, we have to use. we have to Yes. use LHL and RHL because less than and more than is Less here. than. Yes, sir. Yes, बिल्कुल, sir. जब भी कह रही है x is less than half, तो x की वैल्यू अगर हाफ से छोटी है, they are changing the function, and here x is more than half, then this function is a different one. So you have to find LHL and RHL. So what you have to do here is LHL x tending to half minus, मतलब half minus h should be equals to RHL x tending to half plus h should be equals to f of half. f of half तो क्लियर दिख रहा होगा आपको, कितना आने वाला है? कितना होगा f of half? Yes, sir. 1. 1. Very good.
Done, sir. Okay. So this is continuous or not? Not continuous. Not Continuous, sir. Let's doing. Okay. चलिए मैं करके देखता हूँ. LHL will find limit extending to 1 by 2 minus h. So which function will you use, 1 or 2? जब half से छोटा है, use this one function. 1 by 2 The minus first x. function. Yes, sir. Because it is less. बिल्कुल. So this is limit h tending to 0. जब भी हम limit की value put करेंगे, then change it to 0. Half minus x की value आएगी 1 by 2 minus h. And h की value कितनी है? 0. Use direct substitution. 0 रख दो. जो भी नहीं करना होता उसे कर देना होता है in maths. h की value हमने 0 रख दी. So this is 0. So half minus half is 0. Okay. Yes, sir. So हमें यहीं से पता चल रहा है that if LHL equals to 0 and f of half is 1, then this is not going to be continuous. Yes, sir. Right? So we do not even have to find RHL, but suppose someone has to find, जिसको लगता है कि से करना चाहिए, then half plus h 3 by 2 minus x, then limit h tending to 0, 3 by 2 minus half plus h, this is 0, this is 1. But we can see LHL is not equals to RHL, so this is not continuous. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Sir, एक if question. if अगर LHL, after finding that, if we get to know that it is not continuous, can we leave the question at that? Yes, but अच्छे से Okay, लिख sir. देना that we know that LHL is not equals to f of x, F of right, x, or f right, of a. So we right. can say that this is not continuous. क्योंकि आपको बताया ना, मैं देखो 3 कंडीशन में पड़ी, या तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, या f of x Yes, sir. एग्जिस्ट नहीं करता, या दोनों इक्वल नहीं है. Hmm. Yes, sir. ठीक है. बट अगर Okay. 3-4 नंबर का आ जाए तो पूरा पूरा लिख लेना. ठीक है. टीचर Okay. डिपेंडेंट होता है कौन नंबर काट ले कौन नहीं. Okay, sir. So please write a question. F of x equals to 2 minus x, x less than 2, 2 plus x, x greater than equals to 2, at x equals to 2. Okay, you have to check the continuity of the function. Sir, here also we'll use LHL and RSL, right? Yes, because less than and more than is there. Not continuous, sir. Why? LHL, RHL not equal. अच्छे से निकालो फादिल जी, सब दिख रहा है मुझे. Did you calculate on note? Yes, sir. LHL. नहीं. अच्छा, okay. कभी कभी ऐसे मिस्टेक्स हो जाती हैं. ओके, तो प्लीज Okay, कैलकुलेट. The answer is correct, but the reason is not. okay. Sir, But not हम यहाँ continuous because L is not equal to Function. RHL and F. okay, let's see. LHL की वैल्यू कितनी आई? 0. Zero, 0, sir. राइट. Yeah. बिल्कुल Yes, sir. सही है. RHL कितना आया? 4. 4, राइट. तो मैं आंसर बता सकते हैं बिल्कुल ऐसे देख के यहाँ पर, that limit does not exist, so this is not continuous. Aliza, is it getting clear?
सर बट सेम ही चीज तो हुई ना। बट यार लिखो, यहाँ देखो, क्लास में आप जब तक नहीं प्रैक्टिस करोगे बोर्ड्स में भी छोड़ दोगे, ठीक है। लेजीनेस इज ए गुड एट्रीब्यूट व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर कंप्लीशन, बट बोर्ड्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा। ओके, यस सर। ऑलराइट देबोरा, क्लियर? देबोरा की माइक भी नहीं चल रही अब। ओके, वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। फादर देखो, अब ये क्वेश्चन करके दिखाना ऐसे ही विदाउट राइटिंग, यस सर। ठीक है। देखो बहुत अच्छी बात है, इफ यू कैन डू मेंटल कैलकुलेशन देन इट्स अ ग्रेट थिंग, बट पहले एक्यूरेसी पे डिपेंड करते हैं। एंड 4x³ - 3x एंड x is less or more than 1, कहाँ चेक करना है? एट x = 1। Continuous. सॉरी लीजा, Sir, it is continuous. देख के बता दी। लिखना है. हाँ लिखना है। ऐसे कैसे किया आपने? It is व्हाट इज it दिस is वैल्यू? continuous sir. ओके, 1 की वैल्यू रखते हो आप, सपोज -3। हाँ बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो फिर कर लोगे मेंटल कैलकुलेशन? सर तब कंटिन्यूस नहीं रहेगा। कैसे पता? Because LHL won't be equal to the limit itself sir. The function. 10 - 4 6, अभी कितना होगा? हाँ 2। हाँ बिल्कुल सही बात है, 8 × 32 और 6। हाँ हाँ सर। क्लियर है, सब सब कर सकते हैं कैलकुलेशन ऐसे। अलीजा, क्लियर अबाउट 2? ओके, शहरीश, Yes, sir. Clear. ओके, देवोरा, ठीक है। चलो मतलब समझ में तो आ गया तुम लोगों का, है ना? तो थोड़ा Yes sir. क्वेश्चन का लेवल अप करते हैं। मॉडुलस फंक्शन याद है किसी किसी को क्या होता था? Somewhat sir. Positive value के साथ. सॉरी अलीजा, योर वॉइस इज Output नॉट is only positive. पॉजिटिव, बिल्कुल सही। Yes sir. बट व्हेन गिवन इन क्वेश्चंस हम ऐसे कभी भी यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो व्हाट वी राइट, x मोर देन 0 -x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ आपका मेहनत थोड़ा और बढ़ा रहे हैं वो लोग। व्हाट दे विल गिव अस, ऐसे रैंडम क्वेश्चन दे देंगे, mod x + 3x² - 5, इसका कंटिन्यूटी बताओ। सो हियर यू हैव टू मेक द 2 पार्ट फंक्शन, आपको तोड़ना पड़ेगा कि mod x क्या होगा? x होगा जब भी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एंड -x होगा जब भी x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। क्लियर व्हाट आई एम? और फिर ये तो आपको सॉल्व करना आता ही है, ओके। सो हमेशा जब भी मॉडुलस है, ओपन दिस लाइक दिस, ठीक है। फिर आप बहुत इजीली कर सकते हो। एंड मॉडुलस को ओपन करने का दूसरा मतलब, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड मॉडुलस भी देते हैं वो। अगर उन्होंने ऐसा दे दिया 2x - 3 का मॉड, तो एक ट्रिक याद रख लो। ट्रिक मतलब क्या? सपोज यहाँ कुछ भी मसाला दे दिया उन्होंने, एनीथिंग, ठीक है। So it will be broken like this: masala when masala is positive, and negative of masala when masala is negative, ठीक है। अंदर कुछ भी हमें तकलीफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये 2x - 3 को देखते हैं, यहाँ पूरे मसाले की वैल्यू क्या है? 2x - 3। तो इसको मैं लिखूंगा 2x - 3 when 2x - 3 is positive and minus of 2x - 3
when 2x minus 3 is negative. और ये इनइक्वालिटी सिंप्लीफिकेशन करनी आती है हमें. ओके, Yes, sir. तो यहाँ एक वैल्यू मिल जाएगी मोर देन 3/2, x लेस देन 3/2. तो अब फिर से वो कन्वर्ट हो गया एंड यू कैन सॉल्व. ओके, सबको क्लियर हुआ ये? शहरीश, दिबोरा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ये नोट करने किसी को, आगे बढ़े. Noting, sir. ओके, Done, sir. तो एक क्वेश्चन लिखिए. Show that the function f of x equals to 2x minus mod x is continuous at x equals to 0. ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है सबको? Yes, sir. So it is continuous. Yes, they are saying show that the function is continuous, so you have to write it down. Okay, भाई फिर से मैं कह रहा हूँ बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग होती है, सो लिख लिख के करिए. ठीक है, एक आध क्वेश्चन तो करिए Yes, कम sir. से कम. Yes, sir. Right. Sir, function is continuous. Yes, function is continuous. Did you write all this step? पहले लिखेंगे हम f of x equals to 2x minus mod x, which is equals to mod x की वैल्यू x होगी 2x minus x if x is greater than or equal to 0, and 2x minus x if x is less than 0. so x and 3x we are getting, so 0 0 0 मिल रही होगी सबको. इक्वालिटी लगा लेना जिसमें चाहे, नो इश्यूज. Yes, sir. ओके, चलो एक क्वेश्चन और, जो ये सॉल्व कर दे तो उसको एक चॉकलेट मेरी तरफ से. ठीक है, आपकी फेवरेट चॉकलेट जो भी खाते हो आप लोग. f of x is given as mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus, पहले दो दे देते हैं, ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. You have to check the continuity at x equals to 1 and x equals to 2. ठीक है, दो पार्ट क्वेश्चन है ये. You have to check the continuity at 2 points.
But it is not continuous. At both the points, Yes. how did you solve? So by putting the values. Putting the values. नहीं, एकदम गलत बात है, ऐसे नहीं करते. ओके, रिमेंबर दिस, लिमिट में आपने अगर 1.5 भी रखा है ना, सपोज 1 से बड़ा एंड 1 से छोटा 0.5, then the answer might be different because limit is borderline. ठीक है, 1 से बड़ा मतलब 1.00000000001 आ रहा है, इसमें बहुत Sir, डिफरेंस आ at जाता है. x is equals to 1, it is continuous. And what about x equals to 2? Checking. ओके आधी अलीजा, chocolate, sir. आधी चॉकलेट जैसे कोई चीज नहीं होती भाई. जिस दुकान में मिलती है बता देना, मैं दे दूंगा आधी चॉकलेट. ओके, सो लेट मी गिव यू हिंट. ठीक है, तो चॉकलेट की प्राइस थोड़ी कम हो जाएगी, बट कोई बात नहीं. ओपन दिस वन इंडिविजुअली. ठीक है, अब ये टूटेगा जब हमें पता चलेगा कि x मोर देन 1 x लेस देन 1 में टूटेगा. ये आया नहीं? Yes, sir. ये जब टूटेगा, ये टूटेगा x मोर देन 2 x लेस देन 2. तो ये दोनों मिला के पूरे नंबर लाइन को 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, 1 and 2, राइट? लेस देन 1, मोर देन 1, लेस देन 2, मोर देन 2, राइट? तो इन तीनों को मिक्स करके आपको जो फंक्शन मिलेगा ना, उसके 3 पार्ट होंगे. x will be less than 1, x is between 2 and 1, and x is more than 2. Okay? Sir, even at x is equals to 2, You got muted, father. so I'm saying at x is equals to 2 as well, it is continuous. Continuous. Okay. We'll check. देख लो अलीजा जी, गलत हो गया ना, चॉकलेट हाथ से चली गई. ठीक है, सो ऑलवेज मैं ये कह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस में मेंटल कैलकुलेशन समटाइम्स बिकम्स एरर्स. ओके, तो पहले एक्यूरेसी देन स्पीड. ऑलवेज जब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए ना, तब ये जो टुकड़े करना भी है ना, ये फटाफट आप कर सकते हो मेंटली, बट पहले प्रैक्टिस तो कर लो उतना. ओके, Yes, sir. शहरीश. सर टुकड़े के लिए. Yes, sir. I got at x is equal to 1, it's continuous, but at x is equal to 2, I got it as not continuous. नॉट कंटिन्यूअस. देखो डिफरेंट आंसर्स वी आर गेटिंग. ओके अलीजा, यू आस्क्ड मी टुकड़े क्यों किए? क्योंकि मॉडुलस को हम डील ही नहीं कर सकते बिना टुकड़े करे, राइट? इसको क्या करूं मैं, अगर इसमें 5 ऐड करूं तो मुझे नहीं पता कैसे ऐड करते हैं, बट मुझे x -1 के साथ ऐड करना आता है और -x+1 के साथ ऐड करना आता है 5 को. आया समझ में? इसलिए टुकड़े करनी बहुत जरूरत है. सो लेट मी शो यू ऑल द स्टेप्स कैसे लिखेंगे जब बोर्ड्स में आएगा. हम x-1 को लिख सकते हैं, दैट इज, कर्ली ब्रैकेट लगाना आप लोग, है ना, कॉपी मत करना मुझे. and this is -x+1 when x is less than 1, and mod x -2 when more than 2, and x +2 when less than 2. ठीक है? Yes, sir. तो अगर मैं लिखूं पूरा फंक्शन एक साथ, when we add them, ठीक है, तो पहले मैंने कंडीशंस देख ली कि एक बार होगा x शुड बी लेस देन 1, एक बार होगा बिटवीन देम, एक बार होगा मोर देन 2. इक्वलिटी का साइन लगा लेना कहीं कहीं. ओके, दोनों जगह मत लगा लेना. ओके, Yes, sir. अब जब 1 से छोटा है x, when x is less than 1, तो ये कंडीशन है. दैट मीन्स पहले वाले को हम क्या लिखेंगे, -x+1. ओके,
ये बात क्लियर है? देखो x इज लेस देन 1, पहले वाले को देखा हमने, इसमें x इज लेस देन 1, दैट मींस -x + 1 प्लस x इज लेस देन 1, तो यहाँ कौन सा यूज करें, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। सेकंड, क्योंकि x इज लेस देन 2, तो यहाँ भी क्या होगा, -x + 2। दूसरे वाले में बताओ कोई समझदार, कौन कौन रखें वैल्यू? x इज मोर देन 1 बट लेस देन 2। x - 1 plus -x + 2। वेरी गुड, राइट अलीजा, ये समझ में आया? डाउट? सर आ गया। आ गया, ठीक। एंड नाउ व्हेन x इज मोर देन 2, तो सारे ही खुश हैं, ये भी खुश है, ये भी खुश है, x - 1 प्लस x - 2। अब ये फंक्शन सिंप्लीफाइड हो गया है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, दिस इज 3 - 2x एंड दिस इज x तो चला गया और ये भी चला गया, तो दिस इज 0 एंड दिस इज 2x - 3। x is less than or equal to 1, x is this and x is more than 2। अब आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है? Yes, sir. किसके साथ कंटिन्यूस आ रहा है इसमें? I got continuous, sir. See, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे इसमें, तो ये कितना बन रहा है, 1, और यहाँ कितना है, 1, 0. ठीक है? जब 2 रखेंगे तब भी दिक्कत है, ओके? अरे ये x + 2 है ना, मैंने एक गलती कर रखी है इसमें, सॉरी, माय बैड, दिस इज नॉट x + 1, दिस इज x - x + 2, so ये 1 होगा, राइट फादर, योर आंसर वाज करेक्ट, ठीक है? ये है कंटिन्यूअस। Yes, sir. हाँ So even I got confused when you solved it. यस यस, सॉरी माय बैड, x - x + 2 है ना, मैंने एक्चुअली ये +1 लिख दिया इसको, ओके? Yes, sir. Yes. कोई नहीं, कल मैं भी चॉकलेट नहीं खाऊंगा एक, Yes, sir. नोट इट डाउन। हाँ, तो दोनों में कंटिन्यूअस है, ओके? देबोरा, इट इज क्लियर? ओके, नोटेड? Yes, sir. एक क्वेश्चन और, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k
for which the function is continuous at x equals to 3, and f of x is given as x square minus 9 upon x minus 3 when x is not equal to 3, and k when x is equal to 3. Sir, k is equal to 0. No, I don't think that is the, no, that is not the correct answer. Just do this limit, यहाँ भी देखो less than equals to नहीं है, then we do not have to worry. X tending to 3, f of x should be equals to f of 3. f of 3 तो आप लोगों को पता है कितना है, ये k है. So you just have to find this limit. Okay, and Shahrish, limit निकालने का तरीका लास्ट क्लास में हमने करा हुआ था. So this will be using factorization method. ठीक है, when given like this, factorize the numerator and the denominator. जो भी कॉमन चीज है कैंसिल कर दो, then put the value of x. ठीक है, Okay. Sir, what is the answer? आप बताओ. X. 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर. ओके, शहरीश प्लीज लुक इट क्लोजली. देखो यहाँ हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते 3, राइट, बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 9 इज 0 अपॉन 3 माइनस 3 इज 0, सो 0 अपॉन 0. तो यहाँ हम क्या करते हैं, factorize. We can write limit x tending to 3, x minus 3 into x plus 3, a square minus b square. So ये cancel out हो गया. Now put it again, x tending to 3 मतलब x की वैल्यू 3 डाल के देखो, we are getting 6. तो 6 हमें दिक्कत नहीं देता. So k must be equals to 6. Okay. Okay, sir. All right. One more question. Find the value of lambda so that the function is continuous at x equals to -1. f of x equals to x square minus 2x minus 3 upon x plus 1 when x is not equals to 1,
and this is lambda when x is equals to 1. Sorry, this is -1. X is not equals to -1 and x equals to -1. -4. x प्लस 1 कट जाएगा इससे, तो कितना बचेगा हमारे पास? x माइनस 2 नहीं, x माइनस 3 -4. हाँ, सही आंसर. ठीक है. Again, we'll do just this. Extending to -1, f of x should be equal to f of -1, and this is lambda. फंक्शन है हमारे पास x square minus 2x minus 3 अपॉन x plus 1. इसको फैक्टराइज करेंगे हम, हमारे पास x plus 1 इंटू x minus 3 आएगा मोस्ट प्रोबेबली, एंड x plus 1. ओके, x square minus 3x minus 2x minus 3. सो ये गया x वैल्यू -1, so -4. lambda is -4. Okay, Cherish, this is clear? Yes, sir. All right then. तो आज की जितनी चीजें हमने कर ली सब समझ में आ गया? So, sir, when we're factorizing, we need to like make sure that numerator or denominator में कोई एक चीज common हो. हमेशा करेगा, वो क्वेश्चन फ्रेम भी ऐसा है. ठीक है, इट विल ऑलवेज बी ए कॉमन थिंग. ओके, Okay. ऑल राइट देन. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे पूछने दो असेसमेंट होगा या नहीं. ठीक है, आप तब तक रिवाइज कर लो 1 मिनट.